Good afternoon. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the line by line explanation for the lesson Yaadon ke Jaroke se. Lesson 2, Class 8, Madubhan Hindi Saral Patamala. Hope you would have seen the previous video, the line by line reading of the lesson to check your pronunciation. If not, I'll give the link in the description box. Please go and watch the video along with the book and read the lesson 1 or 2 times and check your pronunciation. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos for this book. I will take the explanation video as a part 1 and part 2. In the part 1 video, I'll give the introduction, learning outcome and first few page explanation. In the part 2 video, I'll cover the rest of the lesson. So before getting into the line by line explanation, let's have a quick introduction. What do you think? What is the speciality of students is? Students has the high potential to do things better for the society. And they have the rights to ask questions and gain knowledge. So what you have to do as students? You have to ask questions to improve your knowledge. So what we are going to study in this lesson? Any guesses? Yes, we are going to read the experience of Dr. APJ Abdul Kalam and we'll come to know about his childhood. Do you know what is the full name for APJ Abdul Kalam? So when he was born, what he did for a country, why he is known as People's President, where he was born, what are the things he has contributed for India's research, what are the famous quotes of APJ Abdul Kalam? Can you name few? There are many such questions to answer, right? Though we may not get all the answers from this lesson, but still you will get the curiosity to know more about Dr. APJ Abdul Kalam. So by reading this lesson, you should learn from this lesson from Dr. APJ Abdul Kalam that you have to do the hard work to reach your goal. You have to live a simple life. Education is most important thing which everyone has to gain. We have to respect our culture. We have to search for the knowledge. We have to motivate others. You should respect your teachers and you should follow your dreams. Be in the position to help your family better. You should take the responsibility. Determination is most important for your sustainability. And you should have the love and affection towards nation that you do something better for the nation. Abdul Kalam sir respects his teacher and also his friends. So we have to keep the friendship so pure. We should have a ethical living, no show off, nothing. So many things to learn from APJ Abdul Kalam sir. So these are the few things which we can gain from Abdul Kalam sir's life. Isn't it? So wonderfully he has lived, right? Giving so much of things for us to learn from him. So after reading these lessons, these are the things which we have to take over to implement in our life for our betterment. So a brief about APJ Abdul Kalam. So he was born on 15th October 1931 in Rameshwaram and died on 27th July 2015 in Shillong. So when he was giving a speech in the Indian Institute of Management Shillong, Kalam sir collapsed and died because of the cardiac arrest at the age of 83. APJ Abdul Kalam sir's full name was Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. He was born in a Muslim community and he was the 11th president of India who has been chosen by both the BJP party and Congress party. And he was known as People's President and he has served for the country in the year 2002 to 2007. He is also a famous Indian aerospace scientist. He was born in Rameshwaram and studied physics and aerospace engineering. And for the 4 decades, he was taking care of DRDO and ISRO. He was a scientist and science administrator. He was working for DRDO and ISRO. So DRDO is Defense Research and Development Organization. ISRO is Indian Space Research Organization. So Dr. APJ Abdul Kalam is also known as Missile Man of India for the development of ballistic missiles and launch vehicles technology. The years between 1970 to 1990, he has developed Polar Satellite Launch Vehicles, PSLV and SLV-3. He has also contributed in the development of missiles like Agni and Prithvi. He is the first person who has originally tested the nuclear
Pokhran 2 nuclear test in 1998 and helped the nation to be a nuclear tested nation. Along with cardiologist Dr. Raju, Abdul Kalam sir has developed low-cost stent in the year 1998. Dr. Kalam sir, along with the cardiologist Dr. Raju, has also developed a tablet computer for the healthcare in rural areas, which is also known as Kalam Raju tablet. Kalam Raju stent and Kalam Raju tablets were famous. Kalam sir's book, Wings of Fire, India 2020, Ignited Minds are some of the famous books which were written by Dr. APJ Abdul Kalam sir. He has been awarded with Bharat Ratna, the highest civilian award, and his famous quotes were, "Dream is not that which you see while sleeping. It is something that doesn't let you sleep. Small aim is a crime. Have great aim. Dream big. Excellence is a continuous process and not an accident. If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning." These were few excellent quotes from Abdul Kalam sir, which everyone knows. Hope you have understood the introduction, the learning outcome from this lesson, what we have to learn from Abdul Kalam sir's life. We also got the details about Abdul Kalam. This lesson is introduced for you to increase your curiosity to know and learn more about Dr. APJ Abdul Kalam. Now let's do the line by line explanation. मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में हुआ. So my birth happened in Tamil Nadu in the town called Rameshwaram. कस्बे ना town. In a Tamil family. Tamil परिवार means belongs to Tamil family. मेरे पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे. My father cannot read and write more. वे बहुत धनवान भी नहीं थे and he was not so rich. धनवान ना rich. पर बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों के थे. But he was very clever and has a open thoughts. हम संयुक्त परिवार में रहते थे. वी यूज टू लिव इन ए जॉइंट फैमिली. संयुक्त परिवार इज जॉइंट फैमिली. हमारे घर में बाहर से आने वालों का भी तांता लगा रहता था. सो द पीपल हु यूज टू कम फ्रॉम आउटसाइड मीन्स विजिटर्स विल बी देयर फॉर हिज हाउस. तांता ना इन्फ्लेक्स. मेरी माँ आशी अम्मा. आशी अम्मा इज मदर्स नेम. उन सब के लिए खाना तैयार करती थी. शी यूज टू प्रिपेयर फूड फॉर एवरीवन. इफ यू सी द मैप, दिस इज द प्लेस इन रामेश्वरम, Tamil Nadu, where he was born. So he was born in Rameshwaram to a Tamil family in a small town. Dr. APJ Abdul Kalam's father's name is Jainul Abdin and mother is Ashiamma. So he was born to a normal Tamil family and his mother used to prepare food for everyone who used to visit their house. मेरे माता पिता हमारे समाज में आदर्श दंपति माने जाते हैं. माई फादर एंड मदर वर कंसिडर एज द आइडल कपल. आदर्श दंपति அப்படின்னா आइडल कपल. मैं परिवार के कई बच्चों में से एक था. आई वॉज वन ऑफ द मेनी चाइल्ड हु वर इन द फैमिली. सो दे वेर जॉइंट फैमिली लिविंग विद द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. राइट. सुंदर माता पिता का साधारण सा दिखने वाला बच्चा. सुंदर माता पिता, द ब्यूटीफुल मदर एंड फादर के वेरी नॉर्मल लुकिंग किड. बच्चा इज किड. हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे. वी यूज टू लिव इन आवर पुश्तैनी. पुश्तैनी इज एंसेस्ट्रल. ये घर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था. 19वीं इज 19th सेंचुरी इट वॉज बिल्ट. चूने पत्थर लाइमस्टोन और ईंटों ब्रिक्स से बना ये पक्का. दिस इज़ ए पक्का हाउस, नॉट ए कच्चा हाउस. बड़ा घर. सो दिस इज़ ए वेरी बिग हाउस इन रामेश्वरम की मस्जिद वाली मॉस्क स्ट्रीट. मस्जिद वाली கலீனா ஸ்ட்ரீட். மஸ்ஜித் வழினா மாஸ்க் ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்துச்சு. அவங்க அம்மா அப்பா ரொம்பவே ஐடியல் கப்பல்னு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் மற்ற நிறைய பசங்களில் அவர் ஒரு பசங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹிஸ் ஹவுஸ். இன் ரியல் திஸ் இஸ் ஹிஸ் ஹவுஸ் இன் ராமேஸ்வரம். ஸோ விச் இஸ் an ancestral house, right? The blue color painted house is his house. So it is made up of limestone and bricks. And this was in the mosque street. मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था, अतः घर में आवश्यक चीज़ें ही होती थी. सो माई फादर डजंट लाइक टू शो ऑफ. सो ओनली द नीडेड थिंग्स वर देयर एट होम. आवश्यक चीज़ें मीन्स नीडेड थिंग्स. कह सकता हूँ कि मेरा बचपन बेफिक्री मीन्स केयर फ्री और सादेपन ரொம்பவே நார்மல் प्लेननेसोड आई स्पेंड द चाइल्डहुड. बचपन इज चाइल्डहुड. मैं प्रायः ऑफन अपनी माँ के साथ ही रसोई में ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करता था. Often I used to sit, प्रायः is often I used to sit in the kitchen, रसोईला on the floor and used to have food.
वह मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती. She will lay down or she'll spread the banana leaf. बिछाती ना spread பண்ணுவாங்க வைப்பாங்க और फिर उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांबार देती. So she'll keep rice and this aromatic and very tasty सांबार. साथ में घर का बना अचार and வீட்டில் செஞ்ச ஊறுகாய் pickle और नारियल का ताज़ा चटनी भी होती. So freshly made, ताज़ा ना fresh, freshly made coconut, नारियल ना coconut chutney will also be served along with the sambar rice. So see, the house used to be very simple because his father doesn't like to show off. So Dr. Abdul Kalam is narrating so how he used to sit on the floor and eat the sambar rice with the nariyal chutney and achar. रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है. सो रामेश्वरम इज वेरी फेमस फॉर द शिव मंदिर, शिव टेम्पल, राइट, लॉर्ड शिवास टेम्पल. प्रसिद्ध ना, फेमस. वह हमारे घर से अधिक दूर नहीं था. इट वॉज नॉट फार अवे फ्रॉम माई होम. 10 मिनट पैदल चलकर हम मंदिर तक पहुंच जाते थे. 10 मिनट्स इफ यू गो बाय वॉक, पैदल ना, बाय वॉकिंग वी कैन रीच द टेम्पल. हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार रहते. सो नियर बाय टू माई हाउस मुस्लिम फैमिलीज used to stay. हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी. इन माई एरिया, इलाके ना என்னோட ஏரியாலையும் ஒரு பழைய மஸ்ஜித் இருந்துச்சு, மாஸ்க் இருந்துச்சு, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते. एंड इवनिंग फॉर द नमाज माई फादर यूज्ड टू टेक मी टू दैट मॉस्क. मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी. माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू से द स्टोरीज फ्रॉम रामायण. किस्से ना, டெய்ல்ஸ், ராமாயணாவில் இருக்க சில டெய்ல்ஸ் இல்லை பெக்கம்பர் முகமதோட டெய்ல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. யாருக்கு? பசங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவங்க பாட்டியும் அம்மாவும் சொல்லுவாங்க. ஜுடி கட்னானா அந்த பெக்கம்பர் முகமதை ரிலேட் பண்ண ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ், கட்னானா இன்சிடென்ட்ஸை சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் அ சிவன் டெம்பிள் இன் ராமேஸ்வரம். திஸ் இஸ் ஹவு தட் டெம்பிள் லுக்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் இன் ராமேஸ்வரம். அண்ட் திஸ் இஸ் த மாஸ்க் விச் இஸ் தேர் இன் ஹிஸ் பிளேஸ். அவரோட ஏரியாவில் இருக்கிற ஓல்டு மாஸ்க் இது. So the mother and grandmother used to tell stories of from Ramayana and Pagambar Muhammad. So Ramayana और Pagambar Muhammad ओड़ा stories उन सुलवांगे. रामेश्वर मंदिर के प्रमुख पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे. So लक्ष्मण शास्त्री who is the pujari for the Shiva temple is my அப்பா ஓட ரொம்ப integral friend, ரொம்ப close friend. अभिन्न is integral. मुझे आज भी याद है वह दोनों अपने पारंपरिक वेशभूषा में होते थे. सो दे यूज्ड टू बी इन द ट्रेडिशनल ड्रेस. सो முஸ்லிம்ஸ் வியர் பண்ணுற ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ் அண்ட் பூஜாரிஸ் வில் பி வியரிங் த ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ், ரைட். ஸோ அந்த 2 ட்ரெஸ்ஸும் அவங்க போட்டுட்டு அவங்களோட அக்சர் தார்மிக் விஷயம் पर चर्चाएं करते थे. धार्मिकना रिलीजियस सब्जेक्ट्ஸில் டாபிக்ஸை தே யூஸ் டு டிஸ்கஸ். चर्चाएं डिस्कस பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் லக்ஷ்மண் சாஸ்திரி இன் இஸ் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ் and Dr. Abdul Kalam's father. They wearing the traditional dress, they used to discuss about the religious related topics. जब मेरे पिता ने लकड़ी की नावें बनाने का काम शुरू किया उस समय मैं 6 साल का था. So when my father started to do the business of making the boats using the wood, that time I was 6 years old. ये नौकाएं, so these boats, तीर्थयात्रियों ना, pilgrims को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक, from रामेश्वरम to धनुषकोडी, these boat used to take the pilgrims and for the Ram Mandir यात्रा कराने के काम आती थी. And these boats were used only for taking the pilgrims from Rameshwaram to Dhanushkodi. If these boats were used to take the pilgrims from Rameshwaram to Dhanushkodi. So if you go and check in the map where the Dhanushkodi is and where Rameshwaram is, this is a small island there. So people has to travel from Rameshwaram to Dhanushkodi to see the Ram Mandir. So this is the purpose of the boat of taking the pilgrims from Rameshwaram to Dhanushkodi. हमारे घर के पास एक तालाब था. सो इन नियर बाय टू माई हाउस देर वॉज वन पॉन्ड. उसके बीचों बीच ना नडुला इन द सेंटर ऑफ दैट पॉन्ड राम तीर्थ था. देर वॉज ए राम तीर्थ. वहाँ प्रतिवर्ष राम सीता का विवाह रचाया जाता था. एंड प्रतिवर्ष इज एवरी ईयर रामर कल्याणम நடக்குவாங்க. विवाह मीन्स मैरिज. समारोह स्थल, द समारोह स्थल इज द सेलिब्रेशन प्लेस. அந்த राम तीर्थ இருக்கு இல்லையா, श्री राम की मूर्ति ले जाने के लिए हमारा परिवार विशेष प्रकार की नाव बनाता था. उसी नाव से भगवान की मूर्ति राम तीर्थ तक ले जाई जाती थी. So their family only used to make the boat to take the Lord Ram to the Ram Tirth. See the image, see, this is the pond where the Ram Tirth is there in center of the pond. So boat used to carry Lord Rama's idol from the temple to the Ram Tirth. Okay, the boat which was made by Dr. Abdul Kalam's family
were used to take Lord Rama's idol to Ramtirth. So this is the Ramtirth. So boating in Yamumago. Let me stop the video here as a part 1 for the explanation of this lesson. In the next video, we'll continue the rest of the lines. If you have any doubt or clarification, you can always put in the comment section. I'll reply back. Thank you, students.